बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम उमर बेग कैसे हैं आप लोग How are you my people my family Today we are going to install Oracle Apex 20.2 and ORDS 21.4 with database 19C in Windows 10 इंशाअल्लाह quickly आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से Oracle Apex 20.2 और ORDS 21.4 को database 19C के साथ Windows 10 में इंस्टॉल किया जाता है जल्दी से So first we will create a folder in C drive with the name 19C underscore 20.2 सबसे पहले हम C drive के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे 19C underscore 20.2 के नाम का और उस फोल्डर के अंदर मज़ीद दो फोल्डर बनाएंगे DB और ORDS के नाम के and under this folder we further create two folder with the name DB and ORDS respectively. Extract database 19C in DB folder which we have just created. अब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे database 19C को DB के फोल्डर के अंदर जो हमने अभी बनाया है. Extract ORDS 21.4 in ORDS folder which we have just created, so we do not need to copy and paste ORDS folder. अब हम ORDS 21.4 के फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करेंगे ORDS के फोल्डर के अंदर जो हमने अभी बनाया है, तो हमें ORDS के फोल्डर को कॉपी करके उसको चस्पा करना नहीं पड़ेगा. The downloadable link of ORDS 21.4 is available. However, we have already downloaded ORDS 21.4 का downloadable link जो है वो मौजूद है. अलबत्ता हमने उसको पहले ही डाउनलोड कर लिया है. Extract Apex 20.2 in 19C underscore 20.2 folder, so we do not need to copy and paste Apex folder. Apex 20.2 के फोल्डर को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे 19C underscore 20.2 के फोल्डर के अंदर, तो हमें Apex के फोल्डर को कॉपी करके उसको चस्पा करना नहीं पड़ेगा. The Java version which we are using is Java 8 update 211. जो Java का वर्जन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो Java 8 update 211 है. Run database setup with administrator rights. database का सेटअप चलाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से. Option will be create and configure a single instance database. Hit next button. Option create and configure a single instance database का रहेगा. Next का बटन दबाएं. Option will be desktop class. Hit next button. Option desktop class रहेगा. Next का बटन दबाएं. Option will be use Windows built-in account. You can use other option as well. Hit next button. Use Windows built-in account का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे. आप कोई दूसरा ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं. Assign global database name, password and confirm password from your choice. Uncheck create as container database option. Hit next button. ग्लोबल डेटाबेस नेम देंगे, पासवर्ड देंगे, कंफर्म पासवर्ड देंगे अपनी मर्जी से. क्रिएट एज कंटेनर डेटाबेस के ऑप्शन को अनचेक करेंगे और नेक्स्ट का बटन दबाएंगे. हिट इंस्टॉल बटन, इंस्टॉल का बटन दबाएं.
Oracle database 19C has installed at close button. Oracle database 19C जो है वो इंस्टॉल हो चुका है. क्लोज का बटन दबा दें. ओपन कमांड प्रॉम्प्ट एंड रीच वेयर एपेक्स फोल्डर इज अवेलेबल. कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, वहां जाएंगे जहां एपेक्स का फोल्डर मौजूद है. वहां जाने के बाद ये कमांड चलाएंगे. व्हेन वी रीच देयर रन दिस कमांड. कनेक्ट विद SSDB. कनेक्ट होंगे SSDB से. चेक SGA मैक्सिमम साइज बाय रनिंग शो पैरामीटर SGA कमांड. If it is less than 3000 MB, then we have to increase it. शो पैरामीटर SGA कमांड चलाएंगे और SGA मैक्सिमम साइज पता करेंगे. अगर 3000 MB से कम होगा SGA मैक्सिमम साइज तो हम उसको बढ़ाएंगे. Now we will shut down database by running shut immediate command. अब हम database को बंद करेंगे shut immediate की command चला के. Now we will start database by running startup command. Check SG maximum size again in order to make sure that the changes weighted has reflected or not. SG maximum size दोबारा पता कर रहे हैं ताकि तसल्ली कर लें कि जो तब्दीली हमने की है वो हो चुकी है नहीं. तो जो तब्दीली हमने की है वो हो चुकी है. The changes weighted has reflected. Now we will install Apex by running this command. अब हम Apex को इंस्टॉल कर रहे हैं ये कमांड चला के. Oracle Apex 20.2 has installed. Oracle Apex 20.2 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है. Now we will run this command. User will be admin. Provide email and password from your choice. अब हम ये कमांड चलाएंगे. यूजर जो है वो एडमिन रहेगा. ईमेल और पासवर्ड आप अपनी मर्जी से दे दें. Now we will run this command. अब हम ये कमांड चलाएंगे. Provide password for Apex listener and Apex REST public user, which will be Oracle in lowercase. अब हम ये कमांड चलाएंगे. पासवर्ड देंगे Apex listener और Apex REST public user को जो कि Oracle रहेगा छोटे हरफों में. Now we will run this command. Exit this command prompt. इस command prompt को बंद कर दें. Open new command prompt with administrator rights. नया command prompt खोलेंगे administrator के right से. वहाँ जाएंगे जहाँ ORDS का folder मौजूद है. And reach where ORDS folder is available. And when we reach there, run this command. जब हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो फिर ये command चलाएंगे. और जब हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो ये command चलाएंगे. Now we will provide a configuration path where we want to configure ORDS. अब हम configuration का पता देंगे जहाँ पे हम ORDS को configure करना चाहते हैं. Enter. If your code is 1521, then hit enter. If your code is different, then define your code and hit enter button. अगर आपकी कोड 1521 है तो आप एंटर का बटन दबाएं. अगर आपकी कोड मुख्तलिफ है तो आप अपनी कोड लिखें और फिर एंटर का बटन दबाएं. To find your code, navigate to Oracle और DB 19 Home 1. Expand it. ये कोड पता करने के लिए Oracle और DB 19 Home 1 में है उसको खोल लें. Come to Net Manager, open it. Net Manager पे है उसको खोल लें. Option will be true. Option 2 रहेगा. Provide your seed. अपनी seed दे दें. Enter. Provide password and confirm password for ORDS public user, which will be our case.
which will be Oracle in lowercase. पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड देंगे ORDS पब्लिक यूजर को, जो कि Oracle रहेगा छोटे और फॉर्मेट. एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम विल बी sys. एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम जो है वो sys रहेगा. प्रोवाइड पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड. पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड देंगे. Enter, 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 enter. Provide password and confirm password for Apex public user, which will be Oracle in lowercase. पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड देंगे Apex public user को, जो कि Oracle रहेगा छोटे और फॉर्मेट. Enter. Provide password and confirm password for Apex listener and Apex test public user, which will be Oracle in lowercase. पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड देंगे Apex listener और Apex test public user को, जो कि Oracle रहेगा छोटे और फॉर्मेट. Enter. Copy images folder from the Apex installation folder. कॉपी करेंगे इमेजेस के फोल्डर को Apex के इंस्टॉलेशन फोल्डर में से और उसको चस्पा करेंगे यहाँ and paste it to this path. Enter. Now provide a path to Apex static resource location till images folder. अब हम Apex static resource location को पता देंगे. Enter. Define code from your choice or leave it as it is. आप कोड दे दें अपनी मर्जी से या इसको ऐसे ही रहने दें. When Oracle REST data services initialize appear, we can access Oracle Apex 20.2. However, do not close this command prompt because if it closes for any reason, we cannot access Oracle Apex 20.2. We can reopen it as well. जब Oracle REST data services initialize लिखा हुआ आ जाएगा तो हम Oracle Apex 20.2 को इस्तेमाल कर सकेंगे. ये बात याद रखिएगा कि इस कमांड प्रॉम्प्ट को बंद मत करिएगा, क्योंकि अगर ये किसी भी वजह से बंद हो जाएगा तो हम Oracle Apex 20.2 को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. अलबत्ता हम इस कमांड प्रॉम्प्ट को दोबारा खोल सकते हैं. कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से. Open command prompt with administrator rights and reach where ORDS folder is available. वहाँ जाएंगे जहाँ ORDS का फोल्डर मौजूद है. And when we reach there, run this. And when we reach there, run this command. Oracle Apex 20.2 and ORDS 21.4 with database 19C as installed in Windows 10. Oracle Apex 20.2 और ORDS 21.4 database 19C के साथ Windows 10 में इंस्टॉल हो चुका है. जज़ाकुमुल्लाहु खैर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.